Union Minister Jyotiraditya Scindia is addressing the media. So an addition of 30 lakh route kilometers. The BharatNet program is the world's largest rural broadband connectivity program, costing over $17 billion, connecting all 240,000 gram panchayats across our country. And so while you have seen this huge capital expenditure, this huge infrastructure formation in our country, on the other hand, you have seen costs drop exponentially. एक तरफ जहां अधोसंरचना बना है हमारे देश में, वहीं दूसरे तरफ दाम ऐतिहासिक तरीके से गिरे हैं. A telephone call used to cost 50 paise 10 years ago. It today costs 3 paise. Internet connectivity of 1 GB used to cost 289 rupees. It today costs 8.9 rupees. There's been a 96% drop, as you've seen a huge increase, exponential increase in connectivity. And therefore it is apt that on this day the Prime Minister has unveiled, on the one hand, the World Telecom Standardization Assemblies meeting in New Delhi, and on the other hand, the 8th edition of the Indian Mobile Congress. Now, what does this mean for us? Two events, both landmark events. One international, the other the largest digital conference in Asia, the IMC. Both events together represents a cohesion, a union between those that provide the equipment, provide the service, provide the bandwidth, provide the carriageway, and those that set the standards and the regulations for telecommunications across the world. This is the first time as the WTSA and the ITU is moving forward and setting standards for 6G. The goal is to set standards by 2030. This is the first time in the history of our country, पहले बार इतिहास में, भारत उस स्टैंडर्ड सेटिंग की प्रक्रिया में अपना संपूर्ण योगदान दे रहा है. इसके पहले भारत कमरे से बाहर बैठता था और केवल एक स्पेक्टेटर, एक दर्शक के रूप में स्टैंडर्ड सेटिंग की प्रक्रिया को देखता था. 5G के रोल आउट के बाद जहां देश में सबसे जल्द, फास्टेस्ट रोल आउट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे जल्द 5G की रोल आउट अगर किसी देश में हुई है तो आपके और हमारे भारत में हुई है, जहां 21 महीने में 4.5 लाख BTS लग चुके हैं. 21 महीने में 98% जिले कवर हो चुके हैं. 21 महीने में 80% आबादी कवर हो चुकी है 5G से. और उस वातावरण में पिछले वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री जी ने भारत का 6G विजन को रिलीज किया था और उसी समय भारत 6G अलायंस B6GA, भारत 6G अलायंस को जन्म दिया था, जिस संगठन में
टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जिस संगठन में सरकार के ऑफिसर्स हैं, जिस संगठन में शिक्षा के संस्थाओं के प्रोफेसर्स हैं, आईआईटीज के, जिस संगठन में एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिस संगठन में हर एक स्टेक होल्डर का प्रतिनिधित्व है, 7 वर्किंग ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं और इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद मार्गदर्शन के आधार पर भारत ने अपना मार्क ऑलरेडी स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोटोकॉल में छोड़ दिया है। That was India's Minister for Communications, Jyotiraditya Scindia, briefing the media. The minister was talking about how connectivity in India has flourished many folds in the past decade. He said that a phone call used to cost 50 paise 10 years back, and now it costs 3 paise, which certainly shows how India is taking giant strides in the telecommunication sector. He also said that India has set new example in front of the world.